Hello everyone, in today's video we are going to start a new topic, and the name of this topic is matter and its characteristics. And it's actually the beginning of the chapter number 4. So let's discuss what is matter. Everything which has mass and occupies space is called matter. Let's write the definition so we can memorize it. Everything which has mass and occupies space. What does this mean? It means कि ऐस हर वो चीज़ जिसका एक वज़न है और वो एक जगह पर अपनी पूरा यानी एज एन स्पेस लेती है, that thing is called a matter. Alright, you guys can see a lot of thing around you. For example, अगर हम examples लें तो we can see a chair is actually a matter. We can see a computer, ठीक है, that is also a matter. We can say a clock, ठीक है. All of these are the example of matter. Alright, so let's move on to the next slide. Before we begin and start discussing the states of matter, we should be familiarized with these three words. The first one is particles, because this is the word that is going to be used a lot in the lecture, and I want you guys to be um, known with it. So, what is a particle? It's actually a smallest part of matter. ठीक है, smallest portion matter का जो है उसको हम क्या कहते हैं? Particle कहते हैं, and these particles can only be seen through the microscope. Alright, इसके अलावा there is another word, volume. राइट, वॉल्यूम की अगर आपने इजी वर्ड में एग्जांपल लेनी है तो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एक्चुअली कैपेसिटी, या आप कह लो साइज. किसी चीज़ का भी साइज जो है उसको हम क्या कहते हैं? वो वॉल्यूम है. ये इजी वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ. राइट, इसके अलावा देयर इज अनदर वर्ड अभी जो यूज हुआ है, मैथ. और मैथ्स वर्ड जो है हम वो ज़्यादातर वेट के लिए यूज करते हैं. Alright, so these are the three words that you should know and before starting this chapter. And now we are going to discuss about the different states of matter. Alright, so there are three states of matter. First, solid, liquid, and the third one is gas. So you guys can see that there are a round shape figure shown in each of these boxes. They are actually indicating that these are the particles of these three states of matter. And this is how the particles of these three states look like. We are going to discuss about the properties of each of these matter, and you will learn that how they are different from each other. So what are the properties that makes up a solid? All right, so let's look at the picture over here of the examples. ये कुछ examples given है आपको that are considered as solids, right? A car, a stone, a wood, a kettle, all of these are what? They are actually solid. Okay, so what is solid? A solid is a state of matter with fixed shape and volume. क्या होता है इसका? Fixed shape होती है और उसका जो size है वो भी fixed होता है. You guys can see कि अगर आप कार की example लें तो you can see कि जो गाड़ी है that cannot change the shape, right? वो एक fixed shape में होती है और उसका एक fixed size और एक fixed volume होता है, right? Okay, the second property is that particles are close packed so they can vibrate. जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं? दे कैन ओनली
वाइब्रेट बट दे कैन नॉट फ्लो, यानी वो पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर में फ्लो नहीं करते, लेकिन वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन दे कैन वाइब्रेट. ऑलराइट. So the third property is that solid are rigid. Rigid means वो बहुत सख्त होते हैं. They are hard. Okay, or you can say they are hard. You can actually touch it and you can actually hold it in your hand. The fourth property of the solid is they cannot be compressed easily. ठीक है, compressed मतलब आप उसकी shape को change नहीं कर सकते easily. Alright, it can be changed but वो इतनी easily नहीं होती. You have to apply a lot of pressure and force in order to change the shape of a solid. For example, if you have to, um, cut down the wood, अगर आपको लकड़ी काटनी पड़े तो आप क्या करोगे, you have to use the saw. लेकिन उसके लिए भी you have to be applying a lot of pressure in order to cut that wood. उसका लकड़ी को काटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा pressure apply करना पड़ेगा. So this is the example of solid. Let's move on to the next state of matter, and that is liquid. So you can see the example of liquid over here, the river, the water and the coffee, और इसके अलावा पेट्रोल, और all of these things are considered as the liquid. And what makes them a liquid? उन्हें क्या चीज़ें liquid बनाती हैं? कि liquid have a definite volume. इनका volume जो है वो size तो definite होता है, but it do not have a definite shape. लेकिन उसकी shape जो है वो definite नहीं होती. आप अगर पानी की example लें तो it doesn't have any shape, right? It forms the shape of its container. That means कि आप उसको जिस चीज़ के अंदर डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे, वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, right? अगर आप उसको ग्लास में पोर करेंगे पानी को तो वो ग्लास की शेप में नज़र आएगा. Okay, so the particles are less tightly packed and they can flow. लिक्विड में क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा आपस में पैक्ड नहीं होते पार्टिकल्स, दे आर अ बिट फार फ्रॉम ईच अदर, और वो इजीली फ्लो कर लेते हैं. ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वीकर देन द सॉलिड. ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स को जो चीज़, जो फोर्स एक दूसरे के साथ होल्ड करती है, दैट इज एक्चुअली वीकर इन लिक्विड. लेकिन सॉलिड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है. ऑलराइट. The last thing about the liquids is that liquids are difficult to compress as particles have less space between them to move. लिक्विड्स के जो हैं इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी आप उनको या आप इनको, यानी इनकी शेप जो है वो कंटेनर के मुताबिक होती है, तो आप इसको जितना मर्जी इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करें, इट इज स्टिल गोइंग टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ऑलराइट. तो लिक्विड जो है वो इजीली कंप्रेस नहीं होते बिकॉज दे कैन फ्लो अराउंड इन द इन द स्पेस. Let's move on to the last state of matter, and that is gas. The example of the gas can be कि आप गैस ड्रम्स में आपको गैस मिल सकती है, सिलेंडर्स में होती है, गैस पंप में होती है, फायर. ठीक है, इसके अलावा एयर, ऑक्सीजन. Alright, all of these are gases. So gases have neither a fixed volume nor a fixed shape. गैस की ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही कोई शेप होता है. Alright, gases are not visible to us. हमें नज़र नहीं आती. And it can move freely. और ये बिल्कुल freely move करती हैं because इनके particles जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं होते. They are far from each other and that is why they are free to move around. इसके अलावा गैसेस जो हैं दे स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, यानी जिस जगह पर भी आप गैसेस को रिलीज करेंगे दे आर गोइंग टू बी spread throughout the place. It's not going to stay in a specific site. For example, अगर आप एयर फ्रेशनर की एग्जांपल लेते हैं and you spray the air freshener in the room, आप एक जगह पे एयर फ्रेशनर करते हैं स्प्रे, तो it spreads throughout the room and the fragrance can be felt throughout the room.
अच्छा जी, सो द लास्ट थिंग इज वी कैन फील द फ्रेगनेंस और द ऑर्डर ऑफ द गैस। हमें गैसेस का होने का इस तरह पता लगता है कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द गैसेस वी कैन smell through our nose. I hope you guys have understood what are these three states of matter and learned about their properties. See you guys in the next video.